Hello everyone, in this video I will discuss all the important formulas of the chapter fluid mechanics. Let's start with the point number 1. Density rho equal to mass upon volume. Next, relative density equal to density of substance upon density of water at 4 degrees Celsius. Next, if two liquids of densities rho 1 and rho 2 having mass m1 and m2 are mixed together, then the density of mixture rho is equals to m1 plus m2 upon m1 rho m1 upon rho 1 plus m2 upon rho 2. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम की जगह हमने लिख दिया m1 अपॉन रो 1 प्लस m2 अपॉन रो 2. If m1 equal to m2, then rho is equals to 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2. This is equal to harmonic mean. If two liquids of density rho 1 rho 2 having volume v1 v2 are mixed, then the density of the mixture rho is equals to rho 1 v1 plus rho 2 v2 upon v1 plus v2. This is density equal to mass upon volume. Mass को हमने लिख दिया density into volume. If v1 equal to v2, then rho is equals to rho 1 plus rho 2 upon 2. This is arithmetic mean. ठीक है. Next point number 5. According to Archimedes principle, the buoyant force on a body in a liquid fluid has the following magnitude. F is equals to mg is equals to v rho. M की जगह क्या लिख दिया? v into rho. And g as it is आ गया है. ठीक है. Mass of the liquid displaced by the body m. Vi is immersed volume of liquid. Rho L is density of liquid. G is acceleration due to gravity. Sixth point, if object is immersed in water, relative density equal to weight of body in air upon loss of weight in water. ठीक है. इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर. लॉस ऑफ वेट इन वाटर कैसे निकालेंगे? वेट जो एयर में था माइनस कर देंगे जो वाटर का वेट है. ठीक है. अब थ्रस्ट ऑन अ बॉडी जो इमर्स्ड हो रही है लिक्विड में, जिसकी डेंसिटी है रो एल इन अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए इज एफ इज इक्वल्स टू वी आई rho l g vector minus a vector. Next is subthrust on a body immersed in a liquid of density rho l in a lift moving upward with acceleration a is equal to f is equals to vi rho l g dash plus a. अपवर्ड मूव करेगी तो प्लस करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेगी तो माइनस करेंगे. नेक्स्ट point number 9. If lift is falling freely, then f is equals to 0. Okay. Next, 10th point, the torque of hydrostatic forces per unit width of the wall of a dam is tau is equals to rho g h cube upon 6. H is equal to length of wall, rho is density of water. Next, 11th point, principle of continuity, AV is equals to constant. A is acceleration of cross section of tube, V is velocity of flow. Bernoulli's principle is P plus 1 by 2 rho V square plus rho GH. This is equals to constant. P is pressure, 1 by 2 rho V square is equals to kinetic energy per unit volume. Rho GH is potential energy per unit volume. Velocity of efflux of a liquid through a hole and height h in a vessel V is equals to under root 2 gh. Next, the time taken by the liquid to reach the base level in above case 13, T is equals to under root 2 capital H minus small h upon G. Capital H is height of vessel. Next, if the hole is at the bottom of the tank, time taken to empty the tank is T is equals to capital A upon small a under root 2h upon G. Small a is area of cross section of hole at depth h and capital A is area of cross section of vessel. Viscous force F is equals to minus eta A dV over dy. Eta equal to coefficient of viscosity. Capital A is area of layer of fluid in contact. dV over dy equal to velocity gradient between the layer. 17th Poiseuille formula, the formula of liquid flowing per second. dq upon dt equal to pi p r to the power 4 8 eta l. L is length of the capillary tube, R is radius of the capillary tube, P is pressure difference across the tube. Next, point number 18. Terminal velocity Vt equal to 2 upon 9 r square rho minus sigma into g upon eta. R is radius of the body, rho is density of material of the body, sigma is density of fluid, eta is coefficient of viscosity. सरफेस टेंशन टी होती है एफ अपॉन एल. एफ क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ थिन वायर फ्रॉम सरफेस ऑफ द वाटर. एफ इज इक्वल्स टू टी इंटू 2L. एल क्या है? लेंथ ऑफ थिन वायर. Force required to lift a rectangular plate from surface of the water. F is equals to 2T L plus B. L is length of rectangular plate and B is breadth of rectangular plate.
Next point, force required to lift a circular plate from surface of water, F is equals to capital T into 2R. Force required to lift a ring from the surface of water, F is equals to capital T, 2R1 plus 2R2. R1 is inner radius, R2 is an outer radius. Force required to separate two glass plates of area A containing a liquid film of thickness D between them, F is equals to 2TA upon D. Work done to increase the area of surface film by A, W is equals to T into A. Potential energy क्या होती है? T into A. Work done in blowing a soap bubble of radius R. ठीक है, तो W is equals to 8 pi R square into T. Work done in splitting a liquid drop of radius R into n identical drops, W is equals to 4 pi T R square n to the power 1 by 3 minus 1. Work done in combining n identical drops of radius R to form a big drop of radius R, W is equals to 4 pi T n R square minus R square, and this is equals to 4 pi T R square कॉमन ले लिया है, n माइनस n की पावर 2/3. कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ अ ट्यूब, H इज इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी. यहाँ पर H क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी. T क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, नेक्स्ट इज थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है. R इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी बोर एंड D इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. प्योर लिक्विड के केस में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है एंड H इज इक्वल्स टू 2T अपॉन R रो जी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो देन देयर विल बी अ कैपिलरी राइज. थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी है तो देन देयर विल बी नाइदर अ राइज नॉर फॉल. थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो देन देयर विल बी अ कैपिलरी डिप्रेशन. इक्वल होगी 90 के, देन देयर विल बी नाइदर अ राइज नॉर फॉल. नेक्स्ट, वेट ऑफ द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इक्वल टू mg इक्वल टू 2 pi r t cos theta. Using capillarity, surface tension of liquid which wets solid can be determined by the formula T is equals to H R rho g upon 2 cos theta. X expression in a liquid drop of radius R. Pressure equal to होता है 2T upon R. T है surface tension of the liquid drop. X expression in a soap bubble के केस में जिसकी रेडियस है R, P is equals to 4T. सोप बबल के केस में हम 4T लगाते हैं, लिक्विड ड्रॉप के केस में 2T लगाते हैं. एक्स एक्सप्रेशन इन अ सोप बबल ऑफ रेडियस R व्हेन इट इज इनसाइड द लिक्विड होता है तो 2T होता है. ठीक है, if two droplets of radius R1 R2 in vacuum है Collis center isothermal condition, then the radius of the big drop is given by is R is equals to cube root of R1 cube plus R2 cube. इफ़ टू सोप बबल ऑफ रेडियस R1 R2 है, R1 की वैल्यू बड़ी है, R2 की वैल्यू छोटी है, यहाँ पर R इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ देयर इंटरफेस R is equals to R1 R2 upon R1 minus R2. If two soap bubble of radius R1 R2 combine in vacuum to form a single bubble of radius R under isothermal condition, then R is equals to under root R1 square plus R2 square. If a number of small droplets of water all the same radius R coalesce to form a single drop of radius capital R, then rise in temperature equal to 3T upon J rho S 1 upon R small r minus 1 upon capital R, where S क्या है? Specific heat. Rho is density. Next point. The radius of the two limbs of a U-tube are R1, R2, a liquid of density rho and surface tension T is poured in it. The difference between the levels of liquid H is equals to 2T upon rho G 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay. Now we will discuss other remaining important points, concepts, formulas, questions of this chapter in the next video. On this channel, we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.